Welcome back. Capital Showdown, the big numbers here of the Delhi exit poll. The first cut of the India Today group Cicero Exit Poll predicts a capital edge for the Aam Aadmi Party. AAP set to emerge the single largest party and head for a majority, winning 35 to 43 seats in the 70-member Delhi Assembly. So it's advantage AAP in Delhi. The India Today Cicero Exit Poll data is till 3 p.m. It forecasts that the BJP alliance will be down to 23 to 29 seats. That's a midpoint of 26. Congress to win just 3 to 5 seats in the national polls. Those are the big numbers that we are getting. Bumper voting, I can tell you, indications our final figure could cross 70%, which is a record for the national capital. Let's bring you the headlines also. Fireworks even on polling day, verbal duel raging between the BJP and AAP, with both sides accusing each other of voter buyout. Now, as we have the middle classes switched? If these numbers are true, have the middle classes switched from the BJP, which they supported during the general elections in May 2014, to AAP in February 2015? Or a section of them have they switched, and why have they switched? Let's get it clear. If the AAP wins a majority, it can't be just because of the Jhuggi Jhopdi or the unauthorized colonies. There's a section of the middle class which is attracted. You wanted to make a point, Professor. Do you believe that, as I said before the break, is this a bit like the Shiv Sena, which in localized elections would get the Maharashtrian middle class, would also get the poorer section? AAP seems to be emerging as a regional party of Delhi. No, that's true. I think in many ways, apart from the fact that the ideologies are very different, AAP is doing what Shiv Sena did in Bombay. It is a local party. It is, has a local antenna. It reaches out to people much more spontaneously than any other party does. I also feel that what has happened in terms of BJP's charisma is very important. It has really taken a beating in the last couple of months. And why? What has changed? It's very hard to say. But what has changed is this. Earlier Modi was fighting against Manmohan Singh. Now Modi is fighting against himself. The image he had at that time, was that here's a person who is expressive, who can do things, a man of action, and so on and so forth, contrasting that with the Manmohan Singh, who seemed to be expressionless, ineffective, etc. Now, 9 months later, Modi's other today is what Modi was 9 months back. Which is what? Which is that of a doer. And the fact is that people are asking in 9 months what has happened. Now, some may say that 9 months is too short a time, but in the popular imagination, they say 9 months is 9 months. What has happened? Is it that, or is it that people want checks and balances in our society? That people are saying, Modi is everywhere, Modi is all over the place, let's have a check and balance, even if it's in a small state like Delhi. Yeah, that's true. That is a kind of a rationalization of the whole thing, that we want checks and balances. But if you look at it, you'll find that even in the other by-elections, in state elections rather, Modi didn't do as well as we thought he would. Particularly in Jharkhand, specifically. So while Modi's image does well on a national scale, Modi's image doesn't work that well at the local level. And now, because he's also got to pull up a party. Remember, the BJP Delhi unit has not been the greatest unit that doesn't have charismatic leaders. But Professor, hold that point, because I just want to bring in Seshadri Chari on that. Seshadri Chari, if these numbers are right, and it is a big if, and I'm going to say that again and again, these are not the final results. Will you agree with what Professor Gupta said, that somewhere Modi's charisma is not quite at what it was 9 months ago? Or is the problem with the local unit? Is something gone wrong with the self-goals that you scored? Bringing in Kiran Bedi just 3 weeks before a poll left your local unit feeling angry and disillusioned? Is there something to this, that this juggernaut took life a little too complacently in the last 1 month in particular? No, I'll make 2 points. Number one is, when we look at these percentages, we should not forget one thing. Yes. That overall Congress performance is likely to affect the BJP. The Congress votes, if your exit poll figures are to be believed, has gone down to 15%, you have said. From 24% in 2013, the Congress goes down to 15%. Is bad news for the BJP. Okay. This is one point that I have made in the earlier remarks also. But as far as Modi's charisma is concerned, I would more or less agree with Dipankar Gupta on this point, that the local unit's functioning has a large thing to say. Because if you see the January 10th election rally that was held in Ramlila Maidan, that was a turning point for the BJP leadership to make an assessment of the working of the local. That percentage of people who attended that
sent a message that all is not well with the local unit. Sir, but you are making an important point. You believe that the decline of the Congress is what could be hurting you. That's what you are making, that big point. That if the Congress declines, that would hurt you more than anything else that you have done. You're saying it's the decline of the Congress that is benefiting AAP. No. It's not only the decline of the Congress. It is also the mopping up factor by a third factor, the third party. See, in Maharashtra, you know Maharashtra very well, Rajdeep. In Maharashtra, the decline of the Congress went to both BJP and Shiv Sena. Similarly, in Delhi, the decline of the Congress can go to both the BJP and Aam Aadmi Party. So the decline of the Congress is also equally responsible for this. I just want to hold you, sir, for a moment because the BJP chief ministerial candidate Kiran Bedi is speaking. Just let's listen in. आपने अपना अपना जो भी फैसला किया है, ये आपका अपना अधिकार है। इसलिए आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी तक जो भी मैंने टेलीविजन पे सर्वेस देखे हैं, ये केवल 3 बजे तक के हैं। केवल 3 बजे तक 3 से 6 बहुत भारी जनसंख्या, बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। उसका अभी भी अकाउंट फॉर नहीं हुआ है। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा, क्योंकि 3 से 6 बजे तक का बहुत भारी नंबर क्या सोचता है वो हमें नहीं मालूम अभी। तो आओ इंतजार करें और इसको फाइनल नहीं समझे किसी सर्वे को भी, क्योंकि ये 3 से 6 वाले आंकड़े अभी असेस नहीं हुए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद एक बारी फिर से कि आप सब दिल्ली, और माफी मांगती हूँ कि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पा रही। आप वो वाली आवाज नहीं सुन रहे जो मेरी असली आवाज है, लेकिन आशा करती हूँ कि 1 या 2 दिन की रेस्ट के बाद मैं आपसे 10 तारीख तक जब रिजल्ट पूरे आ जाएंगे आपसे खुल के बात कर सकूंगी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पर इतना विश्वास डाला, विश्वास प्रकट किया और मुझे इतना सराहा। मैंने इतनी तारीफ अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस तरीके की एक एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने मेरे में क्या गुण देखे वही जानते हैं, लेकिन मैंने बार बार उनको कहा कि मैं इतनी तारीफ को मैंने कभी नहीं पब्लिकली सुना। मैंने कुछ और ही सुना था, खासकर अपने महकमे में से। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे पूरी विश्वास है, कुदरत में पूरा विश्वास है कि जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अभी वोटिंग की सर्वे आनी है वो बीजेपी की फेवर में जा सकती है। बीजेपी की फेवर में 100% जा सकती है, क्योंकि उसकी उस 3 to 6 की जो कम्प्लेक्शन है वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है। मैं एक बारी फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि 10 तारीख को सच्चाई की जीत होगी, क्योंकि हम लोगों ने सच्चाई के लिए जीता। दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया, विकास के लिए वचनबद्ध किया। प्रधानमंत्री जी भी हर टाइम ये कहते रहे कि आपने 7 सीटें मुझे लोकसभा की दी, मुझे आपको सूद के मामले वापस देना है। मैं समझती हूँ दिल्ली वाले चाहते हैं कि जितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जितनी डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनको उभारा जाए। ये सच है कि जो मैंने देखा है दिल्ली का हालत बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। उसने मुझे बहुत परेशान किया। क्या दिल्ली सिर्फ लुटियंस दिल्ली है? दिल्ली सिर्फ नई दिल्ली है? सिर्फ उस पर ध्यान देना और बाकी इस तरीके से लोगों को छोड़ जाना, इतने सालों के कांग्रेस के राज बाद मैं समझती इससे बड़ी सजा ऐसे लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं समझती उनको सख्त से सजा होनी चाहिए। क्या डिप्राइव्ड छोड़ गए लोगों को, कीचड़ में, गार्बेज में, भरी हुई नालियों में, बिना स्कूल के, बिना चिकित्सा के, अपराध में, महिला को असुरक्षित कैसे छोड़ गए? कितने सालों के प्रशासन के बाद थोड़े फ्लाईओवर लगा देने, थोड़ी मेट्रो लगा देनी, थोड़ी सफाई लुटियंस दिल्ली की कर दी। ये दिल्ली नहीं। मैं तो बहुत हैरान हूं
कि किस तरीके की दिल्ली ये हमारी पुरानी कांग्रेस की पार्टी छोड़ गई। मैं कहती हूँ इसको दंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिसने 15 साल नुकसान किया और दिल्ली को बांट के छोड़ दिया। वो दिल्ली जिसके पास कुछ है, छोटी सी दिल्ली जिसके पास सब कुछ है, और सारी बाकी की दिल्ली जिसके पास कुछ नहीं है, भरी हुई है गार्बेज के साथ, भरी हुई है डेप्रिवेशन के साथ। डिप्राइव्ड दिल्ली, गार्बेज फिल्ड दिल्ली, चोक्ड। एंड मैंने गुच्छे देखे, गुच्छे, बिजली के गुच्छे, एक माचिस की तीली सिर्फ चाहिए और आग लग सकती है सारे एरिया में। बहुत दुख। हर औरत जो मेरे पास रोती हुई आई कि मुझे सुरक्षा चाहिए, हम बड़े असुरक्षित हैं। हाँ, इस दिल्ली को बहुत कुछ काम चाहिए। एक्चुअली दिल्ली डिवाइडेड है इस वक्त, मैंने देखा है, हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइडेड है। एक के पास कुछ है और दूसरे पास कुछ भी नहीं है। लड़कियों के पास कायदे का पॉलिटेक्निक्स नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कामकाज का कोई साधन नहीं है, और वो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा उन्हीं एरिया में है। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए कोई वोकेशनल स्किल्स नहीं है। बहुत डिप्राइव्ड दिल्ली मैंने देखा है। मैं समझती हूँ दिल्ली के पास भारतीय जनता पार्टी की अगर लीडरशिप आई तो बहुत बड़ी चुनौती होगी इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, बहुत बड़ी चुनौती। मैं बार बार कहती आई हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, ये 2400 घंटे एक दिन में मांगेगा, तब जाके दिल्ली सुधरेगी। 2400 घंटे, 24 घंटे नहीं, 2400 घंटे, क्योंकि जो 15-16 साल का प्रशासन, 12 साल का जितने भी उन्होंने सालों का प्रशासन किया है, इट इज कंडेमेबल। एक मेट्रो दे दो आप, कुछ फ्लाईओवर्स दे दो, वो तो आपने देने थे क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स आनी थी, एशियन गेम्स आई हैं, आपको पैसे मिले थे, लेकिन उस पैसे का भी आपने पूरा सदुपयोग किया। उस पैसे के साथ भी आपने स्कैम्स लाए, आपने करप्शन में इन्वॉल्व रहे, और आप पब्लिक से दूर रहते रहे। किस तरीके से चीफ मिनिस्टर, पुरानी चीफ मिनिस्टर कहती रही पुलिस मेरे पास नहीं है, ये सही नहीं है। उसके पास पैरेलल सिविल डिफेंस था, चीफ मिनिस्टर के पास पैरेलल सिविल डिफेंस होता है, होम गार्ड्स होते हैं, उतना ही फोर्स वो क्रिएट कर सकती थी जितना के दिल्ली पुलिस का है। उन्होंने ये नहीं किया, और दिल्ली को, राजधानी को महिलाओं के लिए असुरक्षित छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि निर्भया कांड अवॉइडेबल था, उबेर केस की, जो उबेर केस का रेप है, अवॉइडेबल था अगर कायदे की पुलिसिंग होती जिसमें कोऑर्डिनेशन है। तो मैं ये कहूंगी कि आगे देखते हैं नेचर और भाग्य ने क्या लिखा है। 3 से 6 बजे वाला अभी भी हमें असेस करना है कि किस फेवर में जाता है। मैं समझती हूँ ये अभी भी ओपन है, रिजल्ट ओपन है, और मेरा विश्वास ये अभी भी आत्मा आवाज देती है कि बीजेपी की फेवर में अभी भी जा सकता है। इसलिए आओ इंतजार करें फाइनली 10th के लिए, और 10th का जो भी रिजल्ट होगा उसको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कराई है, उन्होंने कहा कि आप जो है कैंपेन कर रहे थे, जब आप दौड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि किरण बेदी प्रचार कर रही थी, कंप्लेन की है इलेक्शन कमीशन में। मैं तमाम बूथों को पर जाना था, तमाम बूथ पर जहां मेरी बड़ी गाड़ी नहीं, जो इनोवा थी, वो नहीं जा सकी। अभी छोटी गाड़ी को कैचअप करने के लिए मुझे सारे बूथ को जाना है, क्योंकि मेरे सारे कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात लगाई है, कई महीनों, कई हफ्तों तक दिन रात अपने समय को कुर्बान किया है। मेरा कर्तव्य था उनको जाके धन्यवाद करने का, लेकिन मैंने देखा जब भी मैं सड़क पर उतरती थी मेरे आसपास लोग जुड़ जाते थे, मुबारक देने, प्यार देने, आशीर्वाद देने। मैंने देखा, मैं जा रही हूँ कार्यकर्ताओं के लिए प्यार करने, बच्चों उनका धन्यवाद करने, और साथ में मेरे साथ लोग जुड़ जाते। मैंने किसी के लिए कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन मेरे जहां गई कारवां बनता गया। साथ क्वेश्चन ये है, जहां गई वहां कारवां बन गया। मैंने कारवां नहीं बनाया, मैं तो चली थी अपने साथियों के साथ, अपने जैसे ओम बिरला जी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहे थे, मैं तो चली थी अपनी छोटी टीम के साथ, लेकिन जहां भी छोटी टीम बनी वो कारवां बनता गया। मैंने नहीं बनाया कारवां, मैंने नहीं बनाया, मैंने किसी को नहीं कहा मेरे साथ जुड़ो। इसी प्रकार मेरी गाड़ी के कॉन्वॉय के साथ और गाड़ियां जुड़ती गई और लॉन्ग कॉन्वॉय बन गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ जुड़ो, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्वॉय भी बनता गया। उसके बाद लोग भी जुड़ते गए, फोटोग्राफ्स लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। माँ रुकती गई, माँ। Okay, so Kiran Bedi there with a voice, struggling with her voice.
It appears that the BJP is struggling with its numbers. Across the table, quick reactions in a moment to Kiran Bedi. Was she the wrong choice? If these numbers hold, remember this is if again, a big if. If these numbers hold, was Kiran Bedi the wrong choice? Did the BJP score a self-goal? The first big mistake that Amit Shah and Narendra Modi possibly have made since their remarkable victory in the Lok Sabha polls in May 2014. It appears Janta Janardhan. We will find out what the Janta has really done on the 10th. But for now, it is Dhananjay Janardhan. Our Cicero has decided 35 to 43 is what the AAP is getting. You'll have an AAP government if these numbers hold. Kejriwal, if these numbers hold, is scripting a remarkable political comeback. Himself, the image he had at that time, was that here's a person who is expressive, who can do things, a man of action, and so on and so forth, contrasting that with the Manmohan Singh, who seemed to be expressionless, ineffective, etc. Now, 9 months later, Modi's other today is what Modi was 9 months back. Which is what? Which is that of a doer. And the fact is that people are asking in 9 months what has happened. Now, some may say that 9 months is too short a time, but in the popular imagination, Congress to win just 3 to 5 seats in the national polls. Those are the big numbers that we are getting. Bumper voting, I can tell you, indications our final figure could cross 70%, which is a record for the national capital. Let's bring you the headlines also. Fireworks even on polling day, verbal duel raging between the BJP and AAP, with both sides accusing each other of voter buyout. Now, as we have the middle classes switched? If these numbers are true, have the middle classes switched from the BJP, which they supported during the general elections in May 2014? Welcome back. Capital Showdown, the big numbers here of the Delhi Exit Poll. The first cut of the India Today group Cicero Exit Poll predicts a capital edge for the Aam Aadmi Party. AAP set to emerge the single largest party and head for a majority, winning 35 to 43 seats in the 70-member Delhi Assembly. So it's advantage AAP in Delhi. The India Today Cicero Exit Poll data is till 3 p.m. It forecasts that the BJP alliance will be down to 23 to 29 seats. That's a midpoint of 26. Ideologies are very different. AAP is doing what Shiv Sena did in Bombay. It is a local party. It has a local antenna. It reaches out to people much more spontaneously than any other party does. I also feel that what has happened in terms of BJP's charisma is very important. It has really taken a beating in the last couple of months. And why? What has changed? It's very hard to say. But what has changed is this. Earlier, Modi was fighting against Manmohan Singh. Now Modi is fighting to AAP in February 2015. Not a section of them have they switched, and why have they switched? Let's get it clear. If the AAP wins a majority, it can't be just because of the Jhuggi Jhopri or the unauthorized colonies. There's a section of the middle class which is attracted. You wanted to make a point, Professor. Do you believe that, as I said before the break, is this a bit like the Shiv Sena, which in localized elections would get the Maharashtrian middle class, would also get the poorer section? AAP seems to be emerging as a regional party of Delhi. No, that's true. I think in many ways, apart from the fact that the